18 सितंबर 1961 डैग हैमरशोल्ड, जो कि उस समय यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे, उनकी एक मिस्टीरियस प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। तो आज हम हैं एंडोला के उस स्थल पर जहाँ पे डैग हैमरशोल्ड का जो प्लेन था वो मिस्टीरियसली क्रैश लैंड हुआ था, और ये वही स्थान है जहाँ पे उनकी बॉडी पाई गई थी। इस स्थान और विषय की महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि 1961 में जो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स यहाँ आई थी, उसका निर्धारण भारतीय कर रहे थे। और इंटरेस्टिंगली उस ऑपरेशन का नाम भी हिंदी में रखा गया था, जो कि था ऑपरेशन मोरथोर, टू स्मैश। एक पात्र थे कॉन्गो के लोग, जिसमें बेसिकली मैं उनके प्रांत कटांगा की बात करूँगा। तो वहाँ के लोग चाहते थे आज़ादी दिलाने के जो दो फैक्शंस थे, एक लुबुम्बा का था जो कि रशिया के तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन था, वो रशिया की तरफ था, और दूसरी तरफ था शॉम्बे, वो वेस्ट की तरफ इंक्लाइन थे। तीसरा पात्र इसमें आता है, वो आता है बेल्जियन माइनिंग कंपनी का। और बेल्जियन माइनिंग कंपनी की अपनी खुद की इंटरेस्ट थी, उनका इंटरेस्ट था मिनरल्स और रिसोर्सेज। जो गर्मा गर्मी हुई, जो माहौल हुआ, उसमें सिविल वॉर आ गया। और क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था, पूरे विश्व में कोल्ड वॉर का सिचुएशन था और यूनाइटेड नेशंस भी बन चुका था, जिसका मिशन था विश्व में शांति लाना। तो डैग हैमरशोल्ड यही काम करने के लिए कटांगा आने वाले थे। और क्योंकि कटांगा में हालात बहुत ख़राब थे, तो कटांगा से जस्ट सट करके जो जगह वो एंडोला, तो एंडोला चुना गया था, वो जगह जहाँ पे डैग हैमरशोल्ड आकर के सारे रेबल से और सारे जितने भी पार्टीजन से मिलेंगे और शांति की बात करेंगे। बट शायद शांति किसी को चाहिए नहीं थी। Fridays, Saturdays and Sundays when they are free. That's when we record a huge number of visitors. The UN was just formed in 1945. There was a vacancy, there was a vacuum that the UN had. Trygve Lie, the Norwegian diplomat, had resigned. It's quite funny to understand that Dag Hammarksjold was like warned by Mr. Lie to say, you are going to take up the most impossible job on earth. Nobody ever understood what Mr. Lie was saying until when we see things happening in the Congo Republic in 1960. We are talking about the Congo, we are talking about the crash. And Dag Hammarksjold died here. So in general, the African context, where we know that Africa has had a very, very troubled history. Everybody was supporting African independence. The Belgians didn't want to give independence. People really wanted to be free, politically free. Fully, we are talking about the Congo, the Belgians. And when they were approached by the natives to say, well, will you give us independence, just like others are being given independence, the Belgians refused. 11th of July 1960, there was a tragic announcement that the Katanga had seceded. The Katanga province, that is, it almost was the size of Zambia, a province in the Congo Republic. Okay. Quite huge, with a lot of mineral. The UN planned for an attack on Katanga. They were planning to get Chombe or his supporters and then get rid of the Belgians. But that really failed because instead of the United Nations getting ground, they were now the ones losing. That's the period that Dag Hammarksjold came in. It was in September in 1961. Right. He was coming now into the Congo Republic to meet Moise Chombe. But it was too late because even the section of the population of Congo were thinking that the UN was just a very, very bad group or a bad organization. They looked at how Lumumba was killed and that the UN couldn't do anything. Is that Dag Hammarksjold was well-meaning. He really meant that peace should come back to the Congo. Of course, the Congolese should decide what they should do about their own internal affairs. So basically what you are trying to say is that because the situation in Lubumbashi was not good. Exactly. So they decided that the place near to that, which comes in Zambia, that's Endola. Yeah, the place, of course, we have Lubumbashi, Elizabethville, where the capital for Chombe, it wasn't far. So Chombe was invited to the talks
In And- Andola. yeah, and Dag Hammarksjold was going to fly from Kinshasa. It's very far. Okay. And that was it. The Cold War time, the superpowers still wanted to prove their superiority. It's through military strength. In 1945, the Americans had bombed Japan. Now, the material that they had used to manufacture the atomic bomb for the destruction of Hiroshima and Nagasaki was mined in Katanga. लड़ाई छिड़ी थी दो फैक्शंस के बीच में, एक तरफ थे शॉम्बे, एक तरफ थे लुमुम्बा फैक्शन। और फ़ायदा कौन उठाना चाह रहा था? बेल्जियम की माइनिंग कंपनी। और मदद के पास ये किसके? यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशंस को तो खुद मदद की ज़रूरत थी। कितने सारे स्टेक होल्डर्स थे? कॉन्गोलीज, बेल्जियन, स्वीडिश, अमेरिकन्स, यूरोपियंस, अफ्रीकन्स। लेकिन प्रॉब्लम थी किसकी? ये तो कोई कभी भी नहीं बता पाएगा कि डैग प्लेन क्रैश में मरे थे या किसी ने, बट हम इतना ज़रूर जानते हैं कि डैग एक अच्छा काम कर रहे थे। Yes, I'm happy to see you because the Indian people came to Zambia. I'm happy and I've learned something from this Dag Hammarksjold. I've never been there. You're the one who showed me there because I'm saying dollar. I'm saying Zambia, but I didn't that the Dag Hammarksjold is here. So I'm happy.